हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है आईआईटी जैम 2021 का सोल्यूशन इकोनॉमिक्स के ऊपर. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. द एंटायर पेपर आई विल बी सॉल्विंग इन डिफरेंट सेक्शंस. Okay, so when the expected future marginal product of capital increases, so what will happen to the IS curve? Now let us draw the thing. So marginal product, so people will certainly think that their future consumption and they will become more inclined towards consumption. So now as a result of that, the investment in the present will go right, but savings will obviously fall. So we can see an upward movement. Now in the IS curve, what will happen? So as marginal productivity of capital increases and investment is increasing, so people are thinking, okay, so capital is now very effective, तो कैपिटल से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं. तो इन्वेस्टमेंट सेविंग्स का क्या हो रहा है? सो जहाँ पर आई एस कर्व वाई और ऊपर में आई, सो दिस इज एक्चुअली also shift to the right as LM is not changing, so this will shift to the right. As a result of that, y1 will increase from y1 to y2, i1 increase from i1 to i2. So the answer to the first question is A. Second question की तरफ बढ़ते हैं. An unanticipated inflation दो तरीके होता है, anticipated and unanticipated. So either expected भी बोल सकते हैं. So pi e greater than pi या फिर whatever you expected that is less than pi. These are the two possibilities only we have. तो इसी के ऊपर आधारित करके अगर कैलकुलेशन को हम लोग लेंगे, so this will happen either this or this. So now अगर इसको देखते हुए आगे बढ़े, तो redistribution of wealth from lenders to borrowers. ओके, सो अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन होने की वजह से क्या होता है? सो जो मैंने सोचा था 5% का इन्फ्लेशन होगा, लेकिन मान लीजिए इन्फ्लेशन हो गया 7% का. सो लेंडर जो है, लेंडर टू बॉरोअर में पैसा तो जाएगा, तो पहला तो सही है. दूसरा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ फ्रॉम बॉरोअर टू लेंडर, नहीं, ये नहीं है. तो यहाँ पर लेंडर ही रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा और लेंडर से बोरोअर के पास चला जाएगा. सो अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो लेट मी एक्सप्लेन यू. तो मैंने सोचा था 5% इन्फ्लेशन होगा, उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया. एक और फार्मूला है आई इक्वल टू आर प्लस पाई. आई इक्वल टू आर प्लस पाई इज द फार्मूला. So if we follow this formula, I equal to r plus pi, so then we can see a very important structure over here. So y pi equal to inflation rate, I equal to nominal interest rate, and r equal to real interest rate. Okay, so this inflation is expected than more, so my income, the person's income, the lender's income is less. Okay, so what he expected, he's not getting it. So that's why रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब है, अगर मैंने सोचा था इसको पैसा देकर मैं ऑलमोस्ट लाइक 70 रुपये कमाई लूँगा प्रॉफिट में. नाउ अभी ये जो इन्फ्लेशन आ गया, अब ये 70 रुपये का वैल्यू कम होके मान लो 50 रुपये हो गया, तो मेरा जो वो पैसा वापस कर रहा है, लेकिन पैसा वापस करने के बाद भी जितना मुझे मिलना चाहिए था, जितना मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था, जिसके लिए रिस्क लेके उसको पैसा दिया था, वो पूरा घाटे में चला गया. सो मेरा वेल्थ फ्री में उसके पास चला गया. बोरोअर का यहाँ फ़ायदा है, अगर अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन की वजह से बोरोअर का फ़ायदा है. गेंस फॉर बोथ, बट बिल्कुल नहीं लॉस, नहीं लॉस भी दोनों का नहीं. सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो. आने वाले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर काम करेंगे.